Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Muhammad Kazim Jafri, and I'm here with another important topic: identification of outliers in data analysis. In this lecture, in this presentation, we will learn about it. What are the outliers? What they have impact on data analysis, and how can we identify and how can we deal with the outliers? The first question is that what is the data outlier? Data outlier, that's mean first of all, outlier is basically unusual values of data set. It is also defined as the data points which is away from other typical data points. आपने ये देखना है कि जो एक typical pattern एक डाटा का एक स्टडी का है, अगर उससे कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा पॉइंट उससे अगर डिफ़र कर रहा है और एक सिग्निफिकेंट अंदाज में डिफ़र कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो डाटा का आउटलायर है. बट दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जो विच इज़ अ अनयूजुअल वैल्यू ऑफ डाटा सेट, दीज आर कॉल्ड द आउटलायर. Outliers are always problematic during statistical analysis because they can cause statistical tests to either miss significant or misrepresent the real result. So what is happening here? Actually, basically, either our test maybe give the missignificant findings, or we can far away from a rare result. So outlier can change the total situation. So that's why always they are problematic during data statistical analysis. Very important is that there is no strict rules or method for identifying the definite outliers in data. There are the methods, there are the procedure by which the outlier can be identified, but there is no strict statistical rule by which we can clear cut says that this is the outlier and it should be out from the data. This type of the strict statistical rule is not available. So what are the methods we will learn in the next slide, और हमें वो कैसे हम उनको जान सकते हैं. What is the next thing? That no solid mathematical definition or statistical test. हमारे पास तरीक़े मौजूद हैं, हम जान सकते हैं आउटलायर क्या है, लेकिन स्पेसिफिकली यानी कि जो इसमें स्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल रूल्स की बात थी उसमें ये है कि कोई स्पेसिफिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज़ करके हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये अगर हम अप्लाई करें और जो इसके नतीजे में रिज़ल्ट आए वो दिस इज़ द आउटलायर, एंड देन स्पेसिफिकली उसको हमें आउट करना है. डेफिनेटली अब एक्चुअली जो नेक्स्ट लाइन है वो आपको बताएगी कि इसमें डेफिनेट रिजल्ट्स या डेफिनेट आउटलायर्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो सकते. फाइंडिंग द आउटलायर्स हैवीली डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट एरिया नॉलेज एंड एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली हर वो वैल्यू जो कि अपने टिपिकल पैटर्न से हट के हो, वो तमाम वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि वो आउटलायर हों. ये एक रिस्पॉन्स भी हो सकता है. सो बेसिकली वी हैव टू वेरी मच केयरफुल डीलिंग इन द आउटलायर्स कि आइदर दिस इज़ आल्सो शोइंग अ स्पेसिफिक और डिफरेंट रिस्पॉन्स which is true, which is not erroneously reported, which is not mistakenly reported. So definitely it is depends on the subject area knowledge. तो अगर हम जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उस प्रोसेस को हमें देखना होगा कि यहाँ पर ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते थे क्योंकि हमने ये चीज़ देखी. सेकंड, हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम एक प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो वो उसका सब्जेक्ट एरिया नॉलेज है, वहाँ पर जो डाटा हमें मिल रहा है तो उसके अंदर की नॉलेज आनी चाहिए. यानी अगर कोई वैल्यू हमें आउटलायर स्टैटिस्टिकली नज़र आ रही है लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज भी ज़रूरी है कि हाँ ये आपको स्टैटिस्टिकली आउटलायर नज़र आ रही है लेकिन ये इस प्लांट का, ये इस जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था इसका रिजल्ट निकल के आया है. सो डेफिनेट इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ मेडिसिन फील्ड, सो ये भी एक डिफरेंट हो सकता है. सो हमने ये जानना है कि आउटलायर प्रॉब्लमेटिक होते हैं. यस, वी एग्रीड. नंबर 2, आउटलायर का निकालना डेटा से बहुत ज़रूरी है फॉर द गुड एनालिसिस, फॉर द रियल एनालिसिस. बट there is no specifically a strict rule by which we can clear cut say that this is the outlier. Second thing is that
कि हमें आउटलायर को डील करने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. After this, we will discuss what are the methods of for identifying the data outliers. So if we are dealing the methods, so number one is the graphical method. So graphical method outlier को identification में बहुत ज़्यादा help करता है. And in the graphical method we have different methods: scatter plot, histogram, and inter-quartile range and box plot. So these three methods are very important by which we will try to identify the data outliers. And another method, this is a z-score normal distribution. We will try to know that how the z-scores can identify data outliers. So first of all, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्कैटर प्लॉट. कि स्कैटर प्लॉट से जनाब हम कैसे अपने आउटलायर की निशानदेही कर सकेंगे. फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल डेटा ऑफ सैलरी ऑफ 30 randomly selected स्टाफ ऑफ फैक्ट्री. एंड व्हाट आर द डाटा? Data is, these are the salaries: 24,845 rupees, 34,000. So these are 30 figures and randomly selected from factory. So we plot the scatter plot and identify that whether any outlier is available in this data or not. Okay, so on the x-axis we have number of staff, and on the y-axis we are salary in thousand, and this is basically our data. And we are observing that all the data is moving in this direction. So what is happening with this person? And this person, okay, this person is totally different from the typical pattern of data. So ये unusual है. So unusual है, that's mean it is the outlier. So on the basis of scatter plot we can also identify that कि जो भी value अपने पैटर्न से हट के जा रही हो उसको हम एज ए आउटलायर कंसिडर कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी ऑब्जर्व दैट एंड अनदर मेथड ऑफ द histogram what it says. Basically histogram, again the same problem we are taking, and we will observe that how can we observe here. So on the basis of data we plot the histogram. You know that कि ये एक frequency plotting होती है. हमने इसके डेटा की क्लासेस बनाई 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, और प्लॉटिंग करने के बाद इस ब्रैकेट में कितने लोगों की सैलरी फॉल करी ये उसकी फ्रिक्वेंसीज प्लॉट हुई हैं. सो आप देख रहे हैं कि जो 30 एम्प्लॉयज़ हैं उनका हजूम आपको इस तरफ नज़र आ रहा है, और उसमें किसी की 11 फ्रिक्वेंसी, किसी की 9 फ्रिक्वेंसी, किसी की 5 फ्रिक्वेंसी, बट एक फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो बिल्कुल इस पैटर्न से आउट है. तो अगेन हिस्टोग्राम भी हमें आउटलायर आइडेंटिफाई करने में मदद दे सकता है. So this is an important method and very commonly used in Inter-Quartile Range, in which first of all we array our data in ascending order, and these are 30 employees salaries. तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो हमें मिल रही है वो 15,712 है. सेकेंड 63,141. सो व्हाट इज़ Q1? Q1 is 19,000, actually at 8th value of data, and then which is 19,248. Q1 क्वार्टाइल्स के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि व्हाट आर द क्वार्टाइल्स एंड हाउ दे कंप्यूटेड. Q1 सिमिलरली Q2 का फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो हमारी बन रही है 15 और 16th ऑब्जर्वेशन, तो उसका मिड पॉइंट लेते हैं. सो 25,400, तो 25,751. देन Q3 28,001. And what is the inter-quartile range? Inter-quartile range is very simple: Q3 minus Q1, and we have the range of the 8,753. What is next? Actually, now we calculate the lower limit. We have the Q1, we have the Q3. If the Q1 is subtracted from 1.5 times inter-quartile range, so this becomes a lower limit. Q1 value is 19,000.
उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस इंटर क्वार्टाइल रेंज के 1.5 टाइम्स को। सो हम ये कहते हैं कि ये डाटा की हम बेसिकली लोअर एंड अपर लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके बाद हम ये अज्यूम करते हैं कि डाटा के पैटर्न के मुताबिक लोअर और अपर लिमिट ही डिसाइड करेगी कि जो भी वैल्यूज़ इनके दरमियान होंगी सो वो हम एज्यूम करते हैं कि वो आउटलायर नहीं होंगे। सो अपर लिमिट, सो Q3 प्लस 1.5 time inter-quartile range, so 1.5 time multiplied by inter-quartile range, and then it will be multiplied with 1.5 and addition in Q3, so answer is 41,130. So our data is from 15,000 to 63,000, and we have the lower limit of 6,000 salary, we have the upper limit of 41,000 of salary. So minimum value is falling under this limit, यानी कि उसके नीचे मौजूद है, उससे ऊपर है, तो यानी 6,000 से तो बेहतर ही है ना। हम कह रहे हैं कि 6,000 से नीचे अगर कोई वैल्यू हमें डाटा में मिलती है तो हम कहते हैं कि वो आउटलायर है। लेकिन 15,000 जो कि डाटा की एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है वो इस रेंज के से बाद ही है, उसके अंदर ही है, यानी इस अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में, तो इट्स ओके। हमें बॉटम साइड पे कोई भी आउटलायर नहीं मिल रहा, और यही हमने ऑब्ज़र्व किया था कि हमारा जो स्कैटर प्लॉट है और हमारा हिस्टोग्राम है वो दोनों ने भी ये कंफर्म किया था कि हमें बॉटम साइड पे यानी स्टार्टिंग में कोई भी आउटलायर नहीं मिल रहा। देन अपर लिमिट पे हमारे पास आ रही है 41,000 और वी हैव एन वैल्यू ऑफ द 63,000, ये तमाम वैल्यूज़ जो 41,130 रुपीज़ से ऊपर की सैलरी की हमें मिलेंगी, वी एज्यूम डैट कि वो आउटलायर होंगे एज पर इंटर-क्वार्टाइल रेंज मेथड। So how many values are there? Okay, only one value. Again, it's confirmed that, and with the another method, the 63,141 salary, ये 19th ऑब्जर्वेशन है हमारे डाटा की। सो देन व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज दिस बॉक्स प्लॉट। सो हम इसी की बुनियाद पे जब बॉक्स प्लॉट ड्रा करते हैं, सो अगेन बॉक्स प्लॉट के अंदर यही 19th ऑब्जर्वेशन जो कि 63,000 की है, एक हमें बिल्कुल बॉक्स प्लॉट से बाहर नज़र आती है कि जो ये बता रही है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि बॉक्स प्लॉट की जो ये हिंजेस होती हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम को शो करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 63 थी। सो वी मूव ऑन द प्रीवियस स्लाइड एंड वी शो डैट कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो अपर लिमिट से बाहर होती है, फिर वो हमारा आउटलायर बन जाता है, और उससे बिल्कुल आखिरी एडजस्टेंट वैल्यू 34,000 वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा बन जाती है। तो आप नोट करें कि प्लॉट भी वही हुई हुई है कि 34 यानी 30 और 40 दरमियान 34 हमारी मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट हुई है। तो दिस इज़ मिनिमम, दिस इज़ Q1, this is Q2, this is Q3, and this is the maximum value and this is the outlier. So with another method यानी fourth method हो गया हमारा, उससे भी हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये हमारी जो 19th observation यानी 63,000, this is an outlier. So these are the different methods by which we can easily confirm that identify that of the outliers in our analysis. Another important method is the Z-scores, और Z-scores कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। If our data follows to the normal distribution, then Z-score can quantify unusualness of data point. So again important, unusualness of data point can also be identified with the Z-scores, but the assumption is that the data that we are applying the Z-score methodology, we assume that the data follows to the normal distribution, and normal distribution again in the last lecture of the 18-19 we discussed about the skewness and kurtosis, in which we discussed that what is a normal distribution and how it behaves. So अगर आपको अंदाज़ा है कि ये normal distribution को follow करती है, तो हम Z scores अप्लाई करके भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी अपना आउटलायर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हाउ द Z score can help us to identify? So Z score can be calculated by the formula very simple, x minus mu divided by standard deviation sigma, but we are not dealing in population, we took the sample, so these parameters will be converted into the statistics, and हमें ये जो हमारे
mu है ये will be estimated with the x bar, and this will be estimated with the sample variance, sample standard deviation. So a standard cutoff for finding the outlier, the z score plus minus 3. अगर कोई भी वैल्यू डाटा की z स्कोर पे कन्वर्ट करने के बाद उसका z स्कोर +3 से ऊपर चला जाए या -3 से नीचे चला जाए, आर फर्दर फ्रॉम ज़ीरो, सो दैट्स मीन कि वो अगर ज़ीरो होता है तो एग्जैक्टली वो अपने मीन के बराबर है, और अगर वो अपने मीन से डेविएट कर रहा है लेकिन अगर उसका z स्कोर +3 से ऊपर है या -3 से नीचे, सो हम सेज दैट कि वो हम ज्यूम करते हैं कि वो डाटा की एक आउटलायर डिस्ट्रीब्यूशन है. सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर हम यही z स्कोर कैलकुलेट कर लें, वो कैसे कैलकुलेट कर लें कि यही सैलरी 30 स्टाफ की हमने यहाँ देखे बनाई हुई है और यही सैलरी आपके साथ सामने मौजूद है. सो हमें इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक उसका हमें मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए. सो वी विल कैलकुलेट हियर मीन by the formula of the simple average. So we are taking the average. Okay, so average salary is 25,737 rupees, and we want standard deviation, but this is the population standard deviation, this is sample. So we want sample because we took the sample. This is a random sample. So standard deviation is 8,813, and we will apply the formula. And in formula we say that each observation will subtracted from their mean. अपने mean से करना है, लेकिन ये mean क्योंकि बार बार repeat होगा तो इसको हम fix कर देते हैं, and divided by the standard deviation, और standard deviation is also will be fixed because कि वो एक ही सेल में है और बार बार यूज़ होनी है. सो देखें z स्कोर कैलकुलेट हो गया आ गया. हमने इसको अप टू 3 डिजिट्स पे कर लिया, एंड देन वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि ये 0.101 है, काफ़ी छोटा है ±3 से. इसी को हम ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं और हम देखते हैं कि बाकी z स्कोर्स कैसे बनते हैं. सो दीज आर द z स्कोर्स एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि दे ऑल आर वेरी क्लोज and under the limit of the ±3. So then okay, this is the one and important value which is very large than others, and which is the same, the 19th value है ये डाटा की, और ये 4 आ रहा है. तो डेफिनेटली इसने अपने आप को +3 से बड़ा कर दिया, रेंज से ये आउट है. सो वी कैन से डैट के अगेन z स्कोर कैन आल्सो आइडेंटिफाई दैट द सेम आउटलायर. सो सिंपल स्कैटर प्लॉट, histogram and inter-quartile range, box plot and z score, all 4 or 5 methods are identifying the same outlier. So we can see here the 63,141 has z score 4.2, which is greater than 3. So yeah, we can simply say that the z score is also identifying this is the outlier. In the last, we can conclude that by the different methods, by the applying the different techniques, data analysis can identify the outliers to data. और जब आप ये कंफर्म कर लें कि 2 या 3 मेथड्स से हमें 1 या 2 या 4 जो भी वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा की आउटलायर्स मिल रही हैं, आफ्टर द कंफर्मेशन these all outliers should be discussed with the subject expert under the subject knowledge, because के sometime कोई एक आउटलायर जो आपके मेथड्स बता रहे हैं वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है रिसर्च का. सो if the subject knowledge, subject expert also confirms that this is the mistake, this is an outlier, so after the combination of the mathematical and statistical calculation and subject knowledge, we can decide that this is the outlier and it should be removed from analysis to perform the smooth, clear analysis and real analysis. So thank you very much. I hope that these techniques will help you to identify the outliers, and please keep watching and subscribe our channel
for more videos. Thank you very much.